Manoj bhai, students are talking about EQ, so let's give them a little idea about EQ. Why they should take care of EQ, which is emotional question. So can you spend 2-3 minutes on it? Okay, EQ. See, it's a very difficult question also, because to each person, right, the stakes of giving this particular exam are very different. Some person must be giving it for the first time. They might be still in maybe their engineering college last year, and they are just giving it. Okay, अगर निकल गया तो फिर fresher जैसे वो चले जाएंगे MBA में, and that goes on, right? And for some people, some person, it could be the fourth or the fifth attempt, and the stakes are much higher. Like age भी निकल रहा है, maybe घर वालों से pressure है, maybe they want to get into a financial position, and that's why, so it becomes very difficult to give a very generalized what do you say, advice to everyone ki nahi, you need to be calm. But just in that paper, right, cat, usko fir emotionally attach mat ho jana that day. At least that day, all that you have worked for XYZ months, just have faith in that and go on the last day. Just remember, that is why we are not asking you to remember the formulas, we are not asking you to remember, oh ye wala question aapne ye mock mein kiya tha, right? Just how you are approaching these questions on a day-to-day basis, the strategy. That's why that is the biggest takeaway. So if you just, what happens a lot is aap flip karte ho, something doesn't go right, and next section mein you don't follow your strategy that you had set. Okay, the moment you abandon it, now you are in open sea, and sharks are out to get you then, right? So that is something that you need to avoid. Work right now for the next 20-25 days on fine tuning your strategy, building on strategy, and maybe making a plan B if this doesn't work out. That is completely up to you, right? I was not the kind of person to go to a plan B. Acha, theek hai, mera VARC nahi gaya, to main DILR, I'm going to change my what do you say, the way I perceive or the way I approach a particular paper. My strategy was across the same ki हाँ ये वाला ऐसे करेंगे, ये वाला ऐसे करेंगे, and they are individual. Okay, so whatever works for you all, that is something that needs to be hardwired currently, and that is what you need to be practicing. If concepts are not clear, if strategy is not where you all are yet, okay, if you all are still struggling with say basic concepts of some not VARC, let's take quants. ठीक है, quants का some arithmetic का कोई topic है, या entire quants के साथ आपका कुछ struggle चल रहा है, ठीक है, that doesn't mean that you completely abandon your strategy also. Even when you're doing your basic understanding or basic formulas for AG का, अगर basic formulas भी अगर आप tackle कर रहे हो, make sure you are spending a certain amount of time on working on how you are going to be implementing on the final day. Okay, if you're just free right now, abhi, when you're not actively studying, just looking at your mocks maybe, then look at those mocks and think about how you could have done this better, how you could have approached this better. Or maybe if not even that, if you're just getting 20-30 marks, then try to identify the easiest questions from that set, okay, in your analysis, and think about कि अच्छा ठीक है, ये type के question अगर next set में आएंगे, तो I need to ensure that I attempt those. Okay, so attempt and completely tweak the way ahead. 20 days है, इसमें हसल करना is मतलब mandatory. अभी 20 days के बाद में it's not a lot to ask also. Essentially 3 weeks, right? 3 weeks का आपको risk to reward, मतलब आपको ये returns अच्छा आ जाएगा if you just invest the right amount of what do you say work right now. If you put in the work right now. And some person was asking me कि working people who are professionals right now, how do you manage it, right? I would just recommend maybe last 2-3 days, if you could get a holiday, then that would definitely be very helpful. And guys, because I've given cat right after going from Zomato also once, and that didn't translate. Guys, अगर मैं आपको मनोहर के बारे में थोड़ा स्टोरी बता दूं, मनोहर was into sales मेरे ख्याल से, if I'm not wrong, and भाई ने वहां से फोड़ के he got into FMS. He's a hustler just like me, and he has done a lot of stuff. And Amazon में वो ऐसा कुछ normal job पे नहीं है. He's getting super duper package and his profile is really good. So ये उसकी बहुत बड़ी उसकी मेहनत है. And मनोहर, मैं इनको आपका एग्जाम्पल देते रहता हूँ कि मनोहर जब मुझे मिला था तब उसने कहा था कि ABC तो मेरा नहीं होगा. यू रिमेंबर वी सेड दैट कि आई सेड दैट कि यार क्राइटेरिया बैठता नहीं है. So again, ABC, KIL, SPs, these are not the end of your world, or these are not the end of your life. He got into FMS and he's much better than the ABC folks. He's at par with the Ahmedabad guys यार. कुछ सालों के बाद Ahmedabad वाले इसके नीचे काम करने वाले हैं. You're getting my point? So it's all about hustling for those 20-25 odd days, and it's going to be worth, we can tell you that every single hour that you work your ass off from today onwards is going to be worth. जब तुम्हारा result आएगा,
जीडीपीआई में हमारे तेवर अलग होते हैं, जीडीपीआई में तो हम अलग लेवल पे पढ़ाते हैं बच्चों को, तो आप कभी आना, आपकी एमबीए करा देंगे हम। कमिंग बैक टू द ईक्यू वाला पार्ट, मुझे लगता है ईक्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज बहुत सारे एवरेज बच्चे ईक्यू की वजह से पेपर खराब करके आते हैं। एक 99 वाला बच्चा 96 पे आ जाता है बिकॉज ईक्यू डगमगा गया ऑन अ डी डे। ईक्यू मेरे ख्याल से इट्स जस्ट अ प्रोसेस दैट यू शुड नो कि मुझे ये करना है एंड यू स्टिक टू इट, वेरी सिंपल। एंड देन यू शुड हैव अ प्लान बी कि अगर ये मेरा कुछ फट जाता है पेपर में, अगर मान लो कुछ पंगा हो जाता है तो मुझे क्या करना है, राइट? दैट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस बिकॉज आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल दे टेक डिसीजंस ऑन द डी डे इटसेल्फ, which is not a correct thing। तो डी डे पे मॉडर्न मैथ्स उठा लिया, डी डे पे नंबर उठा लिया, डी डे पे एक हाथ भयंकर आरसी उठा लिया। यू कांट डू दैट, एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 20-22 डेज आपको प्रोसेस फॉलो करना जरूरी है कि मुझे ये आता है मैं इसी के ऊपर खेलूंगा, मुझे टाइम स्पीड डिस्टेंस नहीं आता है मैं टीएसडी को देखूंगा भी नहीं। बहुत सारे बच्चे टीएसडी उठाते हैं पेपर पे, भाई तूने कभी टीएसडी अटेम्प्ट ही नहीं करा मॉक में तो क्यों कर रहा है? सो दैट थिंग कॉल्ड एज ईक्यू, इट इज ऑल अबाउट द प्रोसेसेस दैट यू हैव टू डू। और ये तुम्हें एमबीए में भी काम आएगा, तुम आगे भी चलोगे, बड़े बड़े फर्म्स में भी काम करोगे, तुम्हारा ईक्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट यू शुड नो व्हाट यू आर सपोज टू डू। आप डिविएट कर सकते हो डी डे पे कि चलो मैंने 2-3 क्वेश्चन ज्यादा लगाया, 2-3 क्वेश्चन कम लगाया, बट आपका ईक्यू का मतलब है यू शुड डू, रादर यू मस्ट डू व्हाट यू हैव प्लान्ड ऑन अ डी डे। सो अगर आप वो करोगे यू शुड बी फाइन। कूल। मॉक्स के बारे में बता दो कि मनोहर कितना मॉक्स देना है। दे आर वेरी वेरी टेंस अबाउट मॉक्स कि मेरा सिम कैट ठुक गया, मेरा एम कैट ठुक गया, 2-2 दिन तक एकदम ऐसे तेरे नाम टाइप्स हो जाते हैं लोग, पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ दे देते यार। दे आर लाइक वेरी टेंस अबाउट इट। तू बता, अपना एक्सपीरियंस बता दे। So, since last month, I was pretty much done with all the preparation. Okay, November month, I was just focusing on mocks. I was going for my job. Okay, and I was like, okay, एक routine set करना है हमको. I don't know, भाई, have you all gotten your admit card yet? Yeah, they've gotten their admit card. They've got Perfect, perfect. So good thing. Now you all know your time slot also, I'm assuming. Correct? yeah, time slots they know. Correct, They know correct, that. correct, correct. So By the the way, people 3 time slots we have: morning, Hmm. afternoon, and evening. 2 Evening. hours exam, 66 questions, verbal 24, DRL 20, and quants 22. Perfect, perfect, perfect. So now what you need to do is people who have the freedom of time, right? Who have, you can design your entire day, right? Just try to ensure that you are giving your mocks in that time slot. It helps a lot. If you are going to be a person who studies in the afternoon, but you have a slot in the evening, right? Last day पे body directly adapt नहीं कर पाता. मतलब कर भी लेगा शायद because of how important your day is, but a person who has been doing that over a month is well better equipped. And I learned this from people who are trying to give JE mains in advance. That's what they do, right? And this it just makes organic sense. I did it, it helped me on the final day, right? Because I'm not a person who studies in the morning, but for the last 2 years that I've gave CAT, both of them were morning slots. So मुझे करना ही पड़ा नवंबर में. Afternoon is not going to work, neither my evening is going to work. So that's why try to do that. That helps a lot. If you are already at par and you're just looking to scale your score, right? You can either give a mock on a daily basis if you have a lot of time. How daily? तो आप एक रात को mock दे दोगे and सुबह में या तो आप उसको analyze कर लो, ठीक है? ये 2 slot में divide कर लिया. If you are not there yet, if you don't have the time, then you can do it on an alternate basis also. Okay, completely fine. ठीक है? And this is only for those people जिनका preparation is already done. They don't have much to do with respect to say learning new topics, right? उतना ज़्यादा नहीं होगा. So essentially what I had done is July से मैंने say my only I had notes for quants. So all the notes that I had collected, right? Every day I would just go through the notes and then sit for my exam. ठीक है? You could do that every day. जब वो होने लगता है, the formulas you don't have to actively remember. It just becomes a part of your muscle memory. Okay, that just helps you with respect to pushing your speed on the final day. And people who are struggling now, who do not have say a lot of conceptual graphs or a lot of topics, so and this usually would happen on what in quants only. अगर आप VARC में कहीं struggle कर रहे हो, then you have nothing else to do but sit down with the mocks that you have already given, or the say sections that you have already given, and try to identify where you're going wrong. Because essentially, let's talk about VRC first. Essentially VRC में RC में दो ही type के होते हैं. एक objective question हो गए, subjective question हो गए, ठीक है? Subjective question conventionally more difficult. There are some cases where CAT में बहुत easy subjective questions भी देते हैं, ठीक है? There have been cases, I have seen it. Okay, now coming to objective questions, these are the ones that translate easily from the RCs, right? So if you have been struggling with getting the accuracy up,
look at the objective questions only from each RC. ठीक है, if you have been able to hit them or not. If not, if you've not been able to maintain a certain accuracy in that, then try to understand the reason. Is it the topic of the RC? Is it the language of the RC? Right? Or did you go wrong? Did you make a silly mistake in, what do you say, eliminating the options? What was it? That's how you boost your accuracy, and that's how you start understanding, acha, okay, this is where I'm going wrong, and that is what I need to implement in the immediate next mock. That is trial and error. So ये आपको next 10 days के लिए करना होगा, and then get into the habit of giving mocks and trying to scale your score further. By the way, object का मतलब है fact based, subjective का Yeah. मतलब है inference based. ठीक है, so that's the Correct. bit. Continue, Manoj, please. ठीक है, essentially, and then comes your VA, and my perspective about VA had changed completely after following C2C, after following Ketan Bhai properly. That he would always say that VA के जो 10 क्वेश्चन होते थे, they are always a bonus that is going to push your score. आप कितना भी accuracy maintain कर लो RC में, but आपने VA के वो 10 क्वेश्चन में से आपने नहीं किए, अगर निकाले तो वो नहीं होगा, because RC क्या होता है, it depends on how you are reading and how you are processing data, while VA just comes out of practice. Okay, so say a lot of engineers, the proportion, now let's look at data, like approximately 80 to 90% of us would be engineers giving this, so they would be struggling with VARC, right? So अब उनका RC नहीं निकल रहा है, तो they will be focusing on VA, and that is where they are scaling. If you don't get the VA right, then you are essentially giving them that boost, and percentile is relative, right? तो वो बंदा आगे निकल गया तुम्हारे, या तुम्हारे पास आ गया. That's why VA का प्रैक्टिस करो. अगर PJ में कहीं पे स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है, तो पहले तो ये आइडेंटिफाई करो समरी, ऑड मैन आउट एंड पीजे में आपका स्ट्रॉन्ग सूट क्या है. ठीक है, जैसे ही स्ट्रॉन्ग सूट आपने आइडेंटिफाई कर दिया, देन वो अरेंजमेंट में आपको VA को अटेम्प्ट करना है. ठीक है, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट ऑन दैट डी डे यू आर योर हाइप मैन. यू नीड टू बी लाइक, हाँ मुझे ये आ गया, मुझे ये राइट आ गया. If that is not happening, if your morale is not going higher and higher, then it becomes difficult. It's not impossible still to score your 99 plus, but it becomes difficult. Then you have to be mentally strong. But अपने को उधर पहुंचना ही नहीं है, right? So let's keep the morale high. Let's keep the path easier for us. Identify what you're good at. ठीक है, whatever you are not good at, try to inculcate. अगर पीजे में मैं अच्छा नहीं था, मैं अभी भी अच्छा नहीं हूँ, मेरे को लास्ट 2 सेंटेंस में हमेशा डिफिकल्टी पड़ता था. ठीक है, what I would do is on a daily basis I would just try to do 3 to 5 PJs. ठीक है, अभी लास्ट के 20 डेज में भी आपने 5 PJ निकाल लिए. It just takes 20 minutes maybe to solve these questions. 20 minutes out of your day, your last day पे your PJ comes much easier, much faster. You have almost covered hundreds of PJs in the last 20 days, so that helps. ठीक है, VARC में DILR is completely your EQ game, as much as we have spoken about it today, right? There are some things that you can do. There are some segmentations, like somebody said, I've done sets, I've done this, I've done that. Is this enough for DILR? We don't know what combinations these guys are going to give, right? So do not approach it or perceive it as कि अच्छा ठीक है ये categorize होगा sets में, because आप then वो unidimensional thought process में ही उसको solve करने को try करोगे, and that doesn't work out then sometimes. Right? Because if it's a combination of LRDI, then you not even approach it or perceive it that way. Right? Go with an open mind. DILR is essentially just a set of puzzles. Why is it, what do you say, undergrad agnostic? Like, why does it not matter if you are from, say, engineering or non-engineering background? Is because these are set of puzzles. Right? On spot, how you are able to understand the problem and interpret the data and give them answer is essentially what they want. Right? And if that is not happening, you're not able to solve the sets, don't lose faith. Then look at those 6 questions वाला big sets. ठीक है, वहां पे I'm sure 1-2 question तो होगा जो bucketing में निकल जाएगा. Even if you don't solve the entire thing, right? Even if you just start or maybe even understand the problem, you'd be able to solve those 2 things. Right? Bucketing ने ना बहुत लोगों के कट ऑफ निकलवाए हैं, by the way. Correct. And bucketing works all the time. हर एक साल में मैं इनको कह के थक गया अभी. अब मनोहर तेरी बात सुन लेंगे. Bucketing हर साल वर्क होता है. Continue. See, essentially, think about it like from a corporate point of view, right? See, there are say 6 deliverables, 6 उनको task दिए हैं. अभी एक manager बोलेगा, okay, Manohar, you have to do the 6 deliverables. How I'm going to approach it is I'm going to look at 2 low-hanging fruits first. True. Right? कि ये मैं फटाफट निपटा देता हूँ, तो already I'm 2 down. Right? So 33% of my deliverables are done. Why will I start with the most difficult one? Because that is going to take a lot of time, and उधर मेरा शायद morale भी गिर जाएगा. Correct? So approach it like that.
लाइक अगर 6 क्वेश्चंस है, वो तुम्हारे 6 डिलीवरेबल्स है, जस्ट ट्राई टू फाइंड कि इसमें लो हैंगिंग फ्रूट क्या है एंड उधर से निकालो, ठीक है? ट्रू। That's how you approach this. And finally, with quants, I had one very good strategy, always worked for me. 3 iterations का था, ठीक है? First iteration में I'm just looking at each and every question. Okay, I'm just solving those questions which are almost doable mentally, राइट। or maybe I have to do it एकदम bare minimum मुझे workout करना पड़ेगा. I am very good at what do you say, work, right? I think time and work was one. टाइम एंड वर्क, Correct. या। It's very good. I love those. I love solving those. But time and work के questions are usually longer. यस, ठीक है? एंड टफर। वहां पे आपको आपका ईगो साइड में रखना है कि ये आई गेट बैक टू इट, आई यूज दिस इन iteration 2. Now iteration 2 is when I go back through the paper entirely again, but I've written down which questions are doable and all, whatever segregation आपको करना पड़ता है iteration 1 2 and 3 का, right? So one way you're essentially just solving the easiest questions, and उसमें what else you're doing is, cat has been very notorious with this, is they'll keep the easiest, some of the easiest questions towards the end. भाई दिस ठीक इज है? व्हाट एग्जैक्टली वी हैव डन इन मास्टर कैड आल्सो। हाँ, ये होता है। हाँ, ये हम एंड में रखते हैं। ये हर साल होता है। मैंने जितने ट्रू। भी बार दिया हर साल हुआ है। There have been some questions which are towards the end and they do this purposely. ठीक है? So you need to do this. You need to just go through entire paper जो एकदम easily solve होता है, solve that. ठीक है? And in the meantime जो solve नहीं हो रहा है उसको आप bifurcate कर दो, या तो ये iteration 2 में जाएगा, नहीं तो iteration 3 में जाएगा। ठीक है? And अभी तक मैंने कितने भी बार CAT दिया है, honestly मैं iteration 3 तक पहुंच भी नहीं पाता था, because मेरा speed ही नहीं है उतना। ठीक है? राइट। I'm admitting it, उतना स्पीड ही नहीं है, तो इट्स ओके। ठीक है? एटलीस्ट आई एम नॉट लुकिंग एट दैट क्वेश्चन अगेन एंड थिंकिंग इसको कैसे सॉल्व करेंगे अभी, how are we going to approach this? ठीक है? So you have bifurcated it, segregated it, and I'll only deal with those problems later on. ठीक है? So that is what's important in quants. So easily manageable है. And another thing, the most important thing, no matter how you do in your DILR, ठीक है, चाहिए तो लास्ट का 1 मिनट या मे बी लास्ट के 10 सेकंड रुक जाना DILR में। ठीक है? अगर आपका हो चुका हो पेपर, लास्ट के 10 सेकंड बैठ जाना शांति से, एंड देन अप्रोच योर क्वांट्स, बिकॉज दिस इज द मोस्ट कन्वेंशनल टेल दैट मेरा DILR खराब गया, उसके लिए मैंने क्वांट्स में सॉल्व नहीं किया। वेरी ट्रू। इसमें बहुत 99 वालों के 96 हो चुके, 90 भी आए किसी के। आराम से नहीं हुए यार, या लोग बच्चों ने देखा है। एंड गाइस एक चीट कोड अगर आपको बता दूं, तो डीएलआर में एक सेट आपका शॉर्ट डुएबल आएगा, हर साल आता है, पिछले 5 साल से आ रहा है। एक सेट कोई भी कर लेगा, कोई भी कर लेगा एक सेट। उसके बाद जो गेम चेंज होता है ना, जो मैजिक होता है, वो हमारा बकेटिंग स्ट्रैटेजी से मैजिक होता है। तो ऊपर के जो 2 क्वेश्चन चाहिए ना आपको, तो भाई अभी इस बारी 6 पे they will be getting around about 90 plus, and 8 पे they get 95 in the new pattern by the way. So एक सेट आपको फाइंड आउट करना है जो पूरा का पूरा आपका 1 शॉट में निकल जाएगा। बाकी जो 4 क्वेश्चन बचे, probably you have to do 2 sets, 2 questions, or probably 1 set 3 question, 1 maybe another set 1 question. So 7 से 8 क्वेश्चन आर श्योर शॉट डुएबल। एंड जो तुमने बोला अभी 10 मिनट शांत रहो, so we had this student Gaurav, I am Ranchi guy. So what did he do basically? DILR में उसने 8 क्वेश्चन लगाया, वो शांत बैठा, पेन डाउन, वो 10-15 मिनट टाइम पास करा, वो कौन से फॉर्मुलेज वगैरह रिवाइज करते रहा। एग्जैक्ट 8 पे ना उसको उस टाइम 92 93 आया, वर्बल में 97 फोड़ा भाई, एट क्वांट्स में भी 8-9 क्वेश्चन करके शांत बैठा, ओवरऑल 96 97 है, आई एम रैंची कन्वर्ट हो गया उसका। वो चिल्प मारा था 10-15 मिनट, उसने किसी भी दूसरे क्वेश्चन को हाथ नहीं लगाया, बिकॉज देन यू गेट टेम्पटेशन, यू नो, कि मैं ये भी करूंगा, और फिर 8 पे जाके यू आर कमिंग बैक टू 6, देन यू आर स्क्रूड। सो दिस इज व्हाट वी वांट टू टेल यू। एंड बाय द वे, आप लोड मत लेना, मनोहर इज देयर नाउ, मनोहर विल बी टेकिंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेटजी सेशंस आल्सो। बस उसको तंग मत करना लिंक्डइन वगैरह पे, इंस्टाग्राम वगैरह पे मैसेजेस करके, यू नो, ही इज गॉट लॉट ऑफ स्टफ टू टेक केयर ऑफ, so he'll be available now with you guys. I'm also going to be there, like there are so many, you know, mentors and faculties are there for you all. बस यार अगला 20 दिन मेहनत करो, काफी लाइफ चेंज होती है यार, मनोहर बता सकता है हमें। यू नो, पेरेंट्स कहते हैं 10th कर ले लाइफ सेट है, 12th कर ले लाइफ सेट है, ग्रेजुएशन कर ले लाइफ सेट है, उसमें लाइफ सेट नहीं होता है। बट मैं ऑलवेज कहता हूँ MBA के बाद डेफिनेटली तुम्हारा लाइफ सेट हो जाएगा, हाँ पक्का सेट हो जाएगा। एंड मतलब जब बात करेंगे मनोहर मेरी, या फिर जो भी मेरा पैनल है, जो भी हमारे यू नो फैकल्टीज है, MBA हमारे लिए काफी इमोशनल है, बिकॉज वी हैव स्ट्रगल्ड अ लॉट फॉर आवर MBAs, and we always wanted to do MBA to become somebody, you know, to get into the top notch companies and, you know, get that tag of designations and all that. So ये MBA का एक बहुत बड़ा आपका, you know, एक चीज होगा जो आपको एक आइडेंटिटी देगा, to be very honest.
सो देयर आर अदर थिंग्स आल्सो, पार्टी वार्टी, बट वो सब हर दिन तुम नहीं करोगे। हर दिन पार्टी करोगे तो बेटा 20 को लात मार के बाहर निकाल देगा तुमको। सो तुम्हारा मोटिवेशन जो है वो एक लेवल पे, सो आई टेल यू मनोहर भाई, व्हाटएवर यू नो द सैलरी दैट इज ड्रॉइंग, अगला 6-7 साल में he'll be like एक खोखा प्लस, जस्ट लाइक 1 CR प्लस, राइट? सो काफी अच्छी चीजें होती है आपके साथ। तो यार मेहनत करो, ये एक डिग्री है जो तुमको करना है दिल से, ऑनेस्टली। मतलब इसको अगर तुमने दिल से कराना तो तुम्हारा करियर ऊपर जाएगा। अगर इसमें अगर तुमने मस्ती मजाक करा तो तुमको यूटर्न मारना भी पड़ सकता है। तो इट्स अ लिटिल रिस्की गेम, बट इफ यू प्ले इट वेरी वेल, लाइफ काफी चंगा होगा तुम्हारा। एंड आई वांट नेक्स्ट ईयर, जैसे आज मैंने मोहित को बुलाया, जैसे आज मैंने वेंकी को बुलाया, हैप्पी फेसेस, सक्सेसफुल पीपल, आई वांट लॉट ऑफ किड्स हियर टू जॉइन मी एंड मनोहर नेक्स्ट ईयर आल्सो, जहाँ पे आप गाइड करोगे बच्चों को। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कैट में आई वांट यू ऑल टू डू वेरी गुड, अच्छे से पढ़ाई करना, प्रिपरेशन जो भी बोला करना। मनोहर एंड मेरा सपोर्ट आपको ऑलवेज रहेगा, अभी भी आगे भी रहेगा। कैट अगेन इज नॉट द एंड ऑफ द लाइफ, 90, 92, 95 पे हर परसेंटाइल पे तुम्हें कॉलेज मिल जाएगा। उसके बाद जैट है, उसके बाद IFT है, स्नैप है, एनमैट है, सब कुछ होगा, ठीक है? मैं जाते जाते आपको डिसअपॉइंट नहीं कर रहा हूँ, बट मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ। हमारी एक बच्ची थी, कैट में 50 परसेंटाइल आया, एंड स्नैप एग्जाम दिया, काफी रिमोट विलेज वगैरह से थी, महाराष्ट्र के, घर के कंडीशंस कुछ अच्छे नहीं थे। स्नैप में कुछ 80-85 परसेंटाइल आया उसने, एंड उसको SIBM हैदराबाद मिला भाई। तो उसको अपना CFAP वगैरह भी उसने करा था, एंड शी वांटेड टू डू समथिंग इन फाइनेंस। सो मैंने कहा कि अभी आप रिपीट मत मारो। शी वाज लाइक आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, मैं अच्छा कर लूंगी। मैंने कहा रिपीट मत मारो, आप कर लो। सो भाई शी गॉट इनटू SIBM हैदराबाद, उसका समर वगैरह ठीक ठाक हो गया। यू वोंट बिलीव, शी गॉट अ पैकेज ऑफ लाइक लास्ट मंथ शी कन्वेड टू मी, शी गॉट अ पैकेज ऑफ 9 lakhs, ठीक है? बट भाई दो चीजें काफी इंपॉर्टेंट है दैट आई वांट टू मेक अ मेंशन। शी गॉट इनटू ANZ, ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड बैंक। नाउ ये इतना सेक्सी कंपनी है ना, ये IIMS में भी नहीं जाता है बाय द वे। ANZ SIBM हैदराबाद पे आया था बिकॉज सिम्बी के कॉन्टेक्ट्स काफी है, एंड शी गॉट इनटू क्रेडिट प्रोफाइल, जो चार्टर्ड को मिलता है। शी इज नॉट ए चार्टर्ड, शी जस्ट अ CFAP स्टूडेंट, अपना लाइफ बन गई। एंड यू नो जहां तक मैंने सुना है मेरे जो भी काउंटर पार्ट से, ANZ के इंडिया में इतने कम ऑपरेशन है, उनके मैक्सिमम ऑपरेशन पूरे के जो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में होते हैं, 2-3 साल के बाद ये बच्ची वहां पे सेटल वाली है। सो यू नेवर नो तुम्हारा कहाँ पे क्या क्लिक हो जाए। बस गेम में बने रहो, इधर उधर की चीजों में अपना ध्यान मत दो। कन्वीनर कौन है, IIM बैंगलोर बना रहा है, क्या बनाएगा भाई, ये सब चीजों में मत पड़ना, बस मेहनत करना। एंड वॉट एवर हेल्प यू नीड, पुट इट ऑन द ग्रुप। मी, मनोहर, गौरव, the entire crew is there to help you, the entire panel is there to help you. Manohar, last closing thoughts from your side and we're done for the day. Okay, I'm actually in Amazon ads right now. The director is from SIBM. Wow. डायरेक्टर को रिपोर्ट करता है अहमदाबाद का बंदा, बैंगलोर का बंदा, अच्छा, FMS का। the SIBM, oh holy shit. So merits, एक देखो ये हाँ what हाँ MBA is essentially going to do is the lay the basis, ठीक है? आपका बेस सैलरी, फर्स्ट सैलरी बढ़िया होगा, ठीक है? इट सेट्स अ लॉन्च पैड, उसके आगे भी मेहनत तो है, ठीक है? डायरेक्टर अभी SIBM से, तो सोचो अभी क्या लेवल पे उसने मेहनत करके उधर गया है कि उसके अंडर एक IIM अहमदाबाद का बंदा जो US से भी मास्टर्स किया उसने in tech and then coming, like he has done something right, he has done right. something right, he has hustled quite a bit. So again, right, like Ketan bhai rightly mentioned, cat hai important, yes, ठीक है, but it's not the end. Even no matter where you end up after this, no matter whatever your reasons are, wherever you end up right now, ठीक है, उसके आगे भी मेहनत करोगे तो आपको रिजल्ट्स मिलेगा ही. True man. It'll just be a little difficult. You get into great college, the path becomes easier. Your alumnus network will help you that much. If you get into, say, not that great a college, the path becomes a little difficult. And if you're willing to put in that much hard work, then there is no upper limit to where you can get. Right. I mean, same is applicable to you also, Murray. I think you, तूने कोई कोड छोड़ा, तूने SP जैन छोड़ा, because FMS के लिए हम काफी श्योर थे, और ऐसा नहीं था. I think you would have been better off अगर तेरे को कोई कोड भी मिल जाता, ले जिससे अगर FMS अपना नहीं होता तो. So guys, that's all about it. I think मुझे क्या लगता है ना कि जितना आप ये सब चीजों का प्रेशर नहीं लोगे ना कि मुझे यही कॉलेज चाहिए ऑल दैट, आप उतना इंजॉय करोगे आपका कैट का जर्नी, और जो भी स्कोर आपका आएगा आप दिल से उसको प्रिपेयर करोगे. इस बार अगर मान लो 95, 98, 99 भी आता है, कुछ बच्चे हमारे यहाँ पे है जो 99.60 पे भी रिपीट मार रहे हैं, और अभी 99.9095 उनका मॉक का स्कोर है. सो वो जर्नी काफी ब्यूटीफुल हो जाता है. तो लोड मत लेना, प्रेशर मत लेना, गेम में बने रहना.
मैं मनोहर ऑलवेज रहेंगे, बाकी पूरा पैनल भी आपके साथ रहेगा, एंड यू विल सी मनोहर सर वेरी सून टेकिंग सेशंस आल्सो. Okay, cool. Manoj sir, thank you so much for joining in. And it's 11:07 now. Thanks a lot, man. Thanks a lot. Take care. Thank you so I'll much, speak to you Chetan. very soon. Guys, thank you Yes, so much for joining in. Take care. Have fun. Bye-bye. Work hard.